आप सभी के चाहना और आप सभी के थॉट्स का को लेकर के आज का टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ रेजिलियंस। आई थिंक ये टॉपिक को लेकर के आपकी जितनी सारी रिक्वायरमेंट अभी हमने सुनी, शायद इस टॉपिक में सारा कवर अप हो जाएगा। और इस टॉपिक को हमारे सामने रखने के लिए हम सभी के बीच आए हैं प्रोफेसर गिरीश भाई। मैं भाई साहब को हम सभी के बीच बुलाती हूँ। हम सभी उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत का स्वागत है, वेलकम। मैं भक्ति बहन को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उनको फूल देकर के स्वागत करेंगे। अभी जो मूवी शुरू हुई थी उस मूवी की शुरुआत लाइफ से लेकर के था। कहते हैं लाइफ इज लाइक अ नोटबुक, 2 pages are already written by God. First page is birth, last page is death, center pages are empty. Fill them success with success, happiness, smile. चाहेंगे ना? इसी से भरना चाहेंगे ना? और यही भरने के लिए हम सभी के बीच आए हमारे भाई साहब गिरीश भाई जी, क्योंकि लाइफ के अंदर ये सारी बातें बहुत है। आज हर इंसान बहुत सारे टेंशन को, स्ट्रेस को लेकर के चल रहा है, इसलिए इन बातों की चाहना हर एक के अंदर है। कहते हैं हार्ट इज नॉट अ बास्केट फॉर कीपिंग टेंशन एंड सैडनेस, इट्स अ गोल्डन बॉक्स for keeping roses of happiness. Let your heart be happy always. और उसके लिए ही आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए रखा हुआ है और इसके लिए हम सभी के बीच भ्राता जी है। और अभी का जो समय चल रहा है, बारिश का मौसम है, सुबह का समय है। इस बारिश के मौसम में हम सभी के बीच गिरीश भाई है। हम सभी के ऊपर इन अच्छी बातों की, हमारे जीवन के अंदर इस हैप्पीनेस को, इस लव को, इन सारी बातों को भरने के लिए, इसकी वर्षा करने के लिए हमारे बीच आए हैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर गिरीश भाई। ओम शांति। गौरव कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों का ही मॉर्निंग गुड है, सबका मॉर्निंग गुड नहीं है क्या मॉर्निंग गुड? या फिर बोलते नहीं है। I mean you don't want to share your goodness with me, थोड़ा होल्ड करके रखें, ठीक है? वंडरफुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ग्रेट। ज़माना ये आ गया कि गुडनेस को भी ज़बरदस्ती मंगाना पड़ता है, ठीक है? ग्रेट। It's always a pleasure for me to be here and speak to the audience organized by the SIT Pune. ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के साथ चर्चा करने का मुझे ये मौका मिलता है। बिफोर वी किक स्टार्ट द सेशन, फ्यू एस्पेक्ट्स हम बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं। इज इट ओके इफ आई स्पीक इन इंग्लिश या कंप्लीट हिंदी या फिर मिक्स भी चलेगा? मिक्स चलेगा, जी ओके। हाँ जी, इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश चलेगा, राइट। बहुत दुख होता है जब ये रिस्पांस मुझे ऑडियंस से मिलता है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि शुद्धता का जमाना नहीं रहा है, हर चीज मिक्स पसंद है। ओह माय गॉड, छोटू इज आल्सो एंजॉय। गाना भी मिक्स, खाना भी मिक्स, मूवी भी मिक्स, कपड़े भी मिक्स, भाषा भी मिक्स, ठीक है? दैट्स क्या कर सकते हैं, ऑडियंस का रिक्वायरमेंट ही ये है, तो फिर हमें मिक्स भाषा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ग्रेट। आप में से ऐसे कितने हमारे बहुत अच्छे ऑनरेबल ऑडियंस हैं जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं यहाँ पर हमारे सेंटर में आकर? वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, ओके। एंड हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड माय सेशन? ओके,
6, the previous session, right? Good. उसमें और अभी में बहुत अंतर हो गया है, right? होगा ना कि नहीं अंतर? हाँ सर, आपका सब चला गया। ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है ये तो पता नहीं है, लेकिन देख के तो थोड़ा दुख हो रहा, आपका तो सब गया, ठीक है ना? Great. The power of resilience, ठीक है? I call this as something called as the art of winning. जीतना अर्थात हार में भी जीत महसूस करना। अर्थात there is nothing called as हारना in this world. Every moment, if I ask what is winning, चलो वो छोड़ देते हैं. What is resilience? Technical, literal, dictionary meaning of this word resilience? Failure. ठीक है? It's bouncing back from a state which is I'm not very comfortable with. I'm not very happy about. जो भी मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें से bounce back करना is equal to resilience, right? ठीक है? ये इस शब्द का अर्थ है. Now the question is the power of resilience. ठीक है? अर्थात let us try to understand कि अगर मैं गिर गया हूँ, लूज हो गया हूँ, हार गया हूँ, थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो रहा है, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेरी गोल्स हैं, जो मेरी एस्पिरेशंस हैं, वो सब नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं गिर गया हूँ, ठीक है? And then I have to bounce back myself, right? Let us try to decipher ये हारना मतलब क्या है? तभी तो फिर बाउंस बैक करेंगे, ठीक है? What is हारना? What is failure? Desperate होना? I don't think so. Desperation is your response to the thing that has happened. Not achieving the goal, expected goal. Not achieving the expected goal. I mean, why should you always achieve the expected goal? Is it compulsory? Pardon? One works for it and doesn't achieve. Yeah, I mean, I work for it. 100% सोचा था, मैं 85 तक ही पहुंच पाया, 85% ही हासिल कर पाया. Can I be happy with it? No. ठीक है, मैं नहीं कर पाया, कुछ कारण हो सकता है. उसको हार का डेफिनेशन देना वो सही है क्या? नहीं. तो then what is failure? What is failure? जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं हुआ इज इक्वल टू अगर फेलियर है, तो जैसे मैं चाहता हूँ पर वर्क कर लूं तो फेलियर तो कभी होगा ही नहीं. What is failure? मेरे हिसाब से रेजिलियंस की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बाउंस होना ही नहीं है. मैं हर स्थिति में बाउंस्ड ही हूं, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है जिसमें मैं गिरा हूं. बिकॉज मैंने एक्सपेक्टेशंस पे बहुत अच्छी तरह काम किया है. Failure is not meeting my expectations to the level I deserve. Okay, so you redecide. Success is to meet the expectations which I desire. Yeah, so I have decided that I would like to achieve this. For some reason, did not happen. It's fine. I have decided it. I'll come. You not reach the level of your expectations. So who decides this level of expectations? Yeah. So it's actually the level of expectation is causing the problem to me, because of it, which I call it as failure and success. So there is nothing called as failure and success. It's actually the level of expectations. More related. Oh yeah. So the problem is that my expectations, my standards, my levels, what I have created for myself, the benchmarks, what I have set for myself. So where is the problem? It's my expectations, my benchmark, my levels, my standards. Question. Let us try to understand. कोई दूसरा स्टैंडर्ड सेट करता है और मैं उसको अचीव नहीं कर पाता हूँ, तो फेल हो गया. पहले तो हमने ये समझा my expectation, so I am the problem. How about someone else decides for me? Less successful, it's not failure. Oh, absolutely fantastic. So it's less successful. There's nothing called as failure here. So my mother expects me to become an engineer, and if I have to get into engineering college, minimum basic अच्छा college के लिए let us assume cut off marks is 85% in 12th.
I scored only 80. So my mother is not very happy that I can't. I mean, I am also not very happy. मेरा तो छोड़ दो, अब मम्मी पापा उनका तो फिर उनका expectations भी मैंने तोड़ दिया. तो उनके अनुसार गिरीश is successful or failure? Failure. Less successful. अच्छा, less successful. कैसे? हाँ जी. Right hard. Pardon? What? Right hard. हाँ यार, try it very hard next time. हो जाएगा. Okay. That depends on the temperament of the parents. Oh, that depends upon the temperament of the parents. How good the parent is. ठीक है ना? उनको यहाँ भेज दो ब्रह्मा कुमारी में temperament सब सेट कर देगी. फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करूँगा. It's the problem with the parents' temperament. I mean that's perfectly fine. Let us try to understand, and that's what I believe. If I have to continue with where I left in my previous session, or any of the sessions you have attended, you know what is spirituality? Very simple. Spirituality. Someone was asking that we should go to the youth and try to talk to them. It's very essential. I think it's a must. And हमारे ज्ञानेश्वर भाई ने जो कहा कि हमको स्कूल कॉलेजेस में जाकर के शुरू करना चाहिए, absolutely right. We should think on those lines. मुझे याद आता है एक एक्सपीरियंस आज से करीब 5-6 वर्ष पहले, उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा. I was doing a program in Nainital. My first visit to Nainital was very beautiful place. Hill station भी है, वो ताल भी है. ताल means like lake है. और वो लेक के बाजू में छोटा सा ग्राउंड है. वहाँ पर मेरा प्रोग्राम सेट किया था. बहुत बड़ा टेंट वगैरह लगा करके I was taking a 3-day program. The second day, जो भी मैं बातें कर रहा था, I had a very esteemed guest in my audience, a little aged, higher side of age. He stood up and said, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है. मैंने कहा सर प्लीज आप पूछ सकते हैं. उन्होंने कहा क्या पूछना मतलब? मैंने कहा मैं कहना चाहता हूँ आपसे. मैंने कहा प्लीज बताइए सर. उन्होंने कहा गिरीश भाई आपको देखकर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है. मैंने अपने आप को देखा. मैंने कहा मुझे तो अपने आप को देखकर दुख नहीं हो रहा है, भाई साहब को क्यों दुख हो रहा है? Very inquisitively asked, sir, what's the problem? आपको मुझे देखकर क्यों दुख हो रहा है? मालूम है what he said? Very nice person, ना? He said, इतनी छोटी उम्र में ऐसे कैसे हो गए आप? मैंने कहा मैं कैसे हो गया? ठीक है ना? आप मेरा प्रोफाइल देखोगे तो I am a master's in business administration. I work with the best of the best industry. Of late, my clientele includes ISRO scientists, the black commanders of the Indian Army, L&T, CRMs, shootings, Tarapur Atomic Power Station. These are doctors, expectant mothers, IT professionals, senior management people. These are my audience. मैं कैसे हो गया हूँ? बोला नहीं इतनी छोटी उम्र में ये वाइट पहन के आप सन्यासी क्यों बन गए हो? मैंने कहा चलो उनको छोड़ो, आपको पूछता हूँ क्या मैं सन्यासी लगता हूँ? अगर बच्चे मेरी क्लास में हंस सकते हैं इसका 100% प्रूफ है कि मैं सन्यासी नहीं हूँ. देखा अब देखो यस बोल रहे हैं. ठीक है सब यस बोल रहे हैं क्योंकि ये सन्यासियों को तो कोई समझ ही नहीं सकता है. ठीक है, with due respect to all the सन्यासी, I'm nothing against them. मालूम है वो भाई साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा गिरीश भाई आप ड्रग्स लेते थे क्या? I said my God, ड्रग्स होता क्या? मैंने अब तक देखा नहीं. I've never tasted a cigarette in my life. I can't stand the smoke. As a passive smoker also I can't withstand the smoke. Sorry sir. ये बहुत बड़ी गलत भ्रांति है. एक स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी है. इस स्पिरिचुअलिटी में वही लोग जाते हैं जो गुड फॉर नथिंग थे, बेसहारा थे, बेचारे थे, पढ़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ बन नहीं पाए, अब सहारा ढूंढने के लिए व्हाइट पहन लिया. या मैं एनी अदर ड्रेस फॉर दैट मैटर. एंड द ब्यूटी इज यही जो गुड फॉर नथिंग था इसको बहुत सारे लोग सुनते हैं. मैंने कहा सर I will tell you why I embraced spirituality.
although we say it's an integral part of our life, I mean spirituality is not a different silo altogether that I mean I have to embrace spirituality अलग से. It has to be my 24 hours that I'm a spiritual person. But फिर भी उनके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने कहा सर, जैसे सिस्टर was saying the need, ज्ञानेश्वर भाई कह रहे थे कि यूथ उनको टारगेट करना बहुत जरूरी है. Why? Because पुराने जमाने में ये मान्यता थी कि हमको स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है, वो तो हम जब वानप्रस्थ में चले जाएंगे, 60-70 वर्ष हो जाएगा, तब जाकर हम अध्यात्म में, भक्ति में, भावना में, तीर्थ में, यात्रा में, जप तप कर्म कांड वो सब पूजा पाठ तब करेंगे. इट्स नॉट द नीड फॉर मी राइट नाउ. क्यों ऐसा था? क्योंकि शायद हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी थी. जब मैं फैग एंड ऑफ माई लाइफ में हूँ, तब जाकर अकेलापन आता है. शायद लाइक माई वाइफ इज डेड, बच्चे सेटल हो गए, मैं अकेला हूँ, या फिर उस वक्त थोड़ा सा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ गया है, डायबिटीज हो गया है, सिर दर्द चल रहा है, भूल रहा हूँ चीजों को. उस वक्त कहीं मन को लगाना, कहीं एकाग्रता को प्राप्त करना, जीवन की हर एस्पिरेशंस को मैंने प्राप्त कर लिया, तब जाकर मैं वानप्रस्थी. क्वेश्चन, आज तो 35 की उम्र में बाल चले गए, 40 की उम्र में आर्थराइटिस हो गया, 20 में ही हार्ट अटैक हो रहा है, 25 में ही स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन. तो अगर ये सब प्रॉब्लम एरिया है जो पहले 70 के बाद होता था और उसको हैंडल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी वाज अ टूल, द नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी आज अर्ली एज में इसीलिए है क्योंकि अर्ली एज में ही हमको ये सब प्रॉब्लम है. हमारे स्ट्रेस लेवल्स, forget about stress levels for an employee, a 12th standard student appearing for a 12th standard exam, the amount of stress is huge. आप समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है? So don't you think अगर प्रॉब्लम इस लेवल पे आ गया है तो उसका एंटीडोट, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए. The greatest irony of the system is that we are not empowering our youth to come up with a tool to handle it. And the beauty is, spirituality according to me at the end of the day, if I need to define it, जैसे हम resilience को पता करने का प्रयास कर रहे हैं, ये resilience is to bounce back actually, right? मेरे हिसाब से ये resilience की भी आवश्यकता नहीं है. There is no situation in my life which can bother me, which can disturb me, which can irritate me, which can frustrate me, which can make me feel low. And if I can establish that 24/7, 365 days a year, I think this word loses its importance. Every moment of my life, I am stable, I am cool, I am powerful, I am peaceful, I am happy, I am strength, I have got courage. अच्छा बुरा है ही नहीं है कुछ भी मेरे लिए. I know how to handle the situation. I have the power to handle the situation. Question: spirituality is equal to, according to my definition, जितना मैंने ब्रह्मा कुमारी इसमें समझा, आप अग्री करें या नहीं करें, but we can discuss it out. Spirituality is equal to, one of the most misspelled and misused and misunderstood word, spirituality. Spirituality is equal to one beautiful word, and that is good. Good means you need not do social service. Forget about being good to somebody else. वो तो बहुत बाद की बात है. I'm speaking about being good at the end of the day means, can I be a good husband? Can I be a good wife? Can I be a good mom? Can I be a good dad? Can I be a good friend? Can I be a good employee? Can I be a good project manager? Can I be a good colleague? Can I be a good driver? Can I be a good dost? Can I be a good brother? Can I be a good sister? Can I be a good mother-in-law? Very difficult. उससे ज़्यादा difficult है. Can I become a good daughter-in-law? कभी नहीं. ये लोग इतना तकलीफ देते हैं हमको. Question: can I be good? If good is equal to spirituality, do you think it is easy for me to adopt goodness? अगर मैं बोलूं ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गुडनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आकर गुड बन जाएंगे,
स्लैश अगर मैं कहूँ यहाँ आकर आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे, कोई अंतर है? Good to yourself. Good to yourself, fantastic. और उसी को मैं spirituality कहता हूँ. Spirituality is not this white hand. Sorry, मैं बहुत clear हूँ. Spirituality is not a tonsured head. Spirituality is not wearing this badge. You know, spirituality हो सकता है आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा spiritual हैं, हो सकता नहीं है, मतलब मेरे को बहुत confidence है. Just because you're wearing a trouser and a shirt doesn't in any way belittle you or make Girish by any time better spiritual than you just because you're not wearing a white and white. Just because I'm not a part of any organization doesn't mean it's a state of mind. It's as simple as that. Can I be good? And if I'm good, the goodness will give me the strength to overpower any adverse situations of my life. And that, to become good even in adversity, is equal to resilience. That I don't feel low with the not achieved expected result. It's okay, it's fine. And if I can come to this state of mind and see life positively and handle that particular situation of the so-called word failure in that situation, I mean, you have bounced back. So it's good at the end of the day. How am I able to handle that current scenario, which according to me of the expected results, I couldn't achieve, so-called failure, so-called challenges, so-called chaos, so-called adversities. ठीक लगता है? ठीक लगता है? Very simple. The power of resilience, the art of winning, is equal to situations are not powerful. Who is powerful? I am powerful. I am so powerful कि जैसा मैंने expect किया था वैसा result नहीं आया है. It's okay. I'll work again. I'll come back again. I'll regroup myself again. And अगर ये हम establish कर सकते हैं, मेरे अनुसार इस जिंदगी का कोई भी challenge, कोई भी situation, कोई भी व्यक्ति मुझे disturb नहीं कर सकता है, मुझे परेशान नहीं कर सकता है, मुझे irritate नहीं कर सकता है. And if that is happening, then I may say I am resilient always. या फिर उसकी जरूरत ही नहीं है. You agree with me? ठीक है? Agree with me? Question. आप में बहुत अच्छे ऑडियंस हैं. मालूम है क्यों? क्योंकि सवाल नहीं पूछते. हाँ पूछिए सर. No, you can come. Question and answer are all mixed. Actually, in the beginning you said we have to set our benchmarks in order to define success or failure or success, right? So there are two things basically. First thing is that you can set your own benchmark because you have control on yourself, your emotions and your marks in that. But how to set the benchmark on other people? Basically we play dual role at this age, personal and professional, right? So in personal, very important person is your wife, professional is a manager. How to set their expectation? And both are difficult to handle. So poor husband at the end of the day is being crushed. One professional wife, the other personal wife. Yeah, brother, you're asking. So how to handle it? How to handle others' expectations and their benchmarks? So what he's trying to define is, if I try to define the problem, wife is a personal problem, manager is a professional problem. I think it's not a problem. He didn't like it, huh? मेरी wife को तो problem बोलते हैं. I love her so much. It's a challenge. It's a challenge. On a lighter way. She must be around. बुलंद आवाज में बोलने के लिए हिम्मत वाले कम है. She must be around. Sir is experience. Wife आई नहीं इसीलिए बोल रहे हैं. बहुत मैंने Oh my God. Okay, good. You know, resilience me, problems me. What you are speaking about, we can definitely talk about it also. I call this as something wherein I should be empowered to handle relationship. Yeah,
relationship with anybody, me and somebody else. Okay? Now when you are speaking about setting benchmarks for the other person, it will be anybody for that matter, professional or personal, you need to identify what's the need for setting the benchmark, what is the expected, क्या बोलते हैं, उनमें कितनी capability है उसको achieve करने की. For example, my son for that matter, I mean, if I am expecting that he should be the topper with the understanding that he doesn't understand or उसको थोड़ा slow है with respect to mathematics, and if I keep a benchmark of he should be the topper in the class, sorry, you are doing sin to the person. Rather, you know what I am doing? Setting the benchmark is equal to creating a problem. So your relationship would be strained with the son, and उसको process में उसको number 1 आने के लिए वो relationship और ज़्यादा टूट जाएगा, उसको आपसे और तकलीफ होना शुरू हो जाएगा. ठीक है? Now यहाँ पर हम कहते हैं वो जो process है उसके बाद अब मैंने तो set कर दिया इसका standard कि number 1 आना चाहिए. अब मैं उसको I'm pushing him to the wall. ठीक है? उसमें क्या होगा? I am under stress, he is under stress, the situation becomes back to worse. And then I don't start enjoying life. ठीक? यहाँ पर हमें क्या करना है? हमारे process को भी बहुत अच्छी तरीके से involve करना है. So the question is, I mean, if it's a participatory form of a concept wherein you can set certain benchmarks, that's very important. If you're working in an organization, certain benchmarks are set by the policies with the profile of the organization. It's not what I decide. But if I'm the manager and if I have a subordinate, मैं उनको कहता हूँ ये काम एक हफ्ते तक हो जाना चाहिए. That is what the benchmark you are expecting कि ये काम 7 दिन तक हो जाना चाहिए. I want to report back. साथ में बहुत जरूरी है. I mean, this is a different topic altogether. How do you support him? How do you handle this person so that collectively we achieve the overall objective of the organization, my personal objective as well as his own objective of completing the task within that 7 days. I mean, it's little, off the track, but still, we will try to work it out. Relationship as an issue. Now, the power of resilience, if I have to boil down to that, the art of winning, there are few things what we need to understand. One of the very, core essence of the power of resilience, wherein our understanding is at the same level, that it's not the situation which is troublesome, it's not the circumstances, it is, the problem is with me, with the self. And that's where the genesis of spirituality comes into picture. For example, in a given situation, if I ask you this question, I want a non-verbal answer. Okay? I don't want a verbal answer. If your answer is yes, you raise your hand. If your answer is no, you don't raise your hand. There is no right and a wrong answer. Okay? अगर कोई आपको लगता है yes ही right answer है, it's not so. Wrong ही अगर आपने हाथ नहीं ऊपर उठाया, no answer ही right है, ऐसा भी नहीं है. Think about it and give a very honest reply to it. Can I ask you a question? No verbal. Raise your hand. His answer is yes. No, you don't raise your hand. Question. Mr. Girish from Bombay, or Professor Girish from Bombay, I come from Bombay. He is looking out for at least one person among this honest, august, intellectual, brilliant, beautiful, magnificent audience. Okay? Professor Girish is looking out for at least one person. At least one. It could be full house, okay? But minimum is one. At least one person. जब मैं start बोलूँगा ना, तभी आप answer देना. By the time you listen to the question. So Mr. Girish is looking out for at least one person who thinks, who feels, who believes, who realizes, who understands, who knows. किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आप लोग के बारे में. ठीक है? आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा मानते हो, आप ऐसा जानते हो, आपने ऐसा अनुभव किया है, आपको ऐसा पता है. मैं आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ, ठीक है? I repeat my question. Mr. Girish is looking out for at least one person, minimum one person. It will be many. Who thinks, who feels, who believes, who realizes, who understands that I मतलब आपके लिए मैं I use करूँ, right? That I am the best. Start. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 14. ठीक है, good. कितना audience होगा अपने पास? 50? 50 तक होगा? 50 में से how many?
14, right. Last and final call. Professor Girish is still looking out for more number of people other than those 14 who think, who feels, who believes, who realizes, who understands, who knows that I am the best. Raise your hand. Other than those 14, huh? 14 के अलावा क्या बताएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये ऐसा है कि ये बेस्ट है तो फिर मैं भी कोई कम नहीं हूँ. समझ में क्या रखा है इसने? इसका तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स मैं जानती हूँ. बेस्ट बोलती है. अकेले मिलकर दिखाती हूँ तेरे को. मैं जानती हूँ तेरे बारे में. इसने उठाया तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ. मैंने भी उठा दिया. गुड यार. It's like in some situations, I have to. Either you raise your hand or you don't. So what's your take? Yeah. ठीक है. जब इतना देर से मैंने आपको बोला था you can participate, तब तो कुछ नहीं बोला. जब मैंने बोला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तब कितना अच्छी तरह जाओ. Sorry sister, I'll give you an opportunity, but till the time you finish this question, either you raise your hand or you don't. Keep listening to whatever I say. ठीक है. Sorry, हाँ. So I have got 14 plus कितना था? 14 plus 7, 6, 21 मान लीजिए. ठीक है. Last and final call. Professor Girish is still looking out for more number of people other than those 21 who think, who feels, who believes, who realizes, who understands, who knows that I am the best. Raise your hand. क्या बात है? उन्होंने थोड़ा एग्रीमेंट किया. तू भी हाथ ऊपर उठा, मैं भी उठाती हूँ. क्योंकि प्रॉब्लम क्या मालूम है? हाथ ऊपर उठाने से मरेंगे या हाथ नीचे रखने से मरेंगे यही पता नहीं चल रहा. दोनों में मरने वाले तो उठा देते हैं. दोनों में ही गड़बड़ लग रहा है. अब हाथ अगर बेस्ट बोल दिया उन्होंने उठा दिया, फिर कहाँ से बेस्ट है जरा प्रूव करके बता तो मैं दे दे, वो प्रॉब्लम है. फिर तो क्या हो रहा है पता नहीं. So I've got 22, one more. ठीक है. Okay. Last and final. Sir, आपको लास्ट का अर्थ मालूम है कि लास्ट तो पहले से शुरू किया और 4 बार तो पूछ ही हो रही हूँ. लास्ट ही पूछ रहे हो. पर लास्ट मतलब ओनली वंस. लास्ट एंड फाइनल कॉल. भगवान के लिए प्लीज हाथ ऊपर उठा देना. ठीक है. इट्स अ रिक्वेस्ट. ठीक है. लास्ट एंड फाइनल कॉल. Professor Girish is looking out for more number of people other than those 22 who thinks, who feels, who believes, who realizes, who understands.